Hello and welcome to your digital classroom Study with Sudhir. Study with Sudhir में आपका स्वागत है and today we are going to be looking at geography, a chapter from geography that's called transport. But a couple of reminders before we start. First, do subscribe to the channel because that helps build a community of students, teachers, parents where we can interact, because what Google Analytics tell me is that a large number of non-subscribers are those who are coming and actually looking at the video lessons. No issues with that at all, but the whole idea of Study with Sudhir is to create a digital learning community. Number two, ensure that you stay with me till the end of the video, because what I do is to periodically keep giving tips on what can actually come as a question in the examination paper. So if you skip the portion or listen to only the first 4 to 5 minutes, you will actually lose out on a lot of information. So I hope you stay with me till the end of the chapter on transport, an important chapter and also a chapter where you can actually score 10 out of 10 marks. It's not a very difficult chapter, but like most things in geography, थोड़ा मेमोरी पावर पे जोर डालना पड़ेगा, काफ़ी कुछ याद रखना पड़ेगा, बट दिस ऑल्सो इंटरेस्टिंग जनरल नॉलेज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ज़्यादा मुश्किलात होनी नहीं चाहिए. तो शुरू करते हैं. सो व्हाट इज ट्रांसपोर्ट? What is transport? And you need to know this definition. The exchange of goods, which we call trade, is greatly dependent on the availability of transport to send goods from one part of the world to another. Simple, basic, elementary. Now, development of cheap and efficient means of transport is essential for the progress of the country. And when we speak of transport, we speak about roadways, we speak about railways, we speak about airways, and we speak about waterways. और इन चारों के बीच का जो अंतर है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उन सभी के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है. वो सब आई विल टेल यू थ्रू द कोर्स ऑफ दिस वीडियो लेसन. नाउ, an integrated transport system is needed to help bring different people together, and it is needed to strengthen the nation's economy, right? Now, we first come to road transport. Now, Sher Shah Suri, one of the early rulers of India, he had built a road which was known as the Grand Trunk Road, and that connected Peshawar, which was of course at that time in India, now it's in Pakistan, Peshawar with Kolkata. So that was this long distance and it was called the Grand Trunk Road, and it was renamed as Sher Shah Suri Marg, and now of course it connects Amritsar to Delhi, much shorter distance. It is called the Sher Shah Suri Marg after the person who built it, but at that time when he built it, it was connecting right from Peshawar to in the northwest to Kolkata in the east. Now, what are the advantages of the road transport system? Now, roads, उनका महत्व ये है that they are necessary in the transport of people and goods over short and medium distances. First, very easy to understand if you just use common sense and not try to mug up everything. Roads are important as they are necessary for the transport of people over short and medium distances, right? They are cheap and easy to construct, to maintain. Not exactly, given the way we have seen how potholes emerge in the roads in the country, especially at monsoon time. So they are not really very easy to maintain nor very cheap, but definitely as compared to say airways and railways, they are definitely quite cheaper. So that is advantage number 2. Advantage number 3, and this is important, that roads can be constructed in hilly areas as they can negotiate steep slopes and sharp bends. You would have seen, जब आप कोई हिल स्टेशन में जाते हैं तो आपको वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे रोड मिलते हैं कई सारे हिल स्टेशंस पे. And I have always found it very amazing how they actually cut through mountains and hills in order to create these kind of wonderful roads. Border areas में the Border Roads organization does some fabulous work. So roads are easy because obviously you cannot construct an airport out there. In most mountains you cannot do that. Railways, they find it difficult if it's a mountainous area. So roads become the most convenient and the easy way to negotiate these kind of hilly slopes. Roads can act as feeders to railways. Feeders का मतलब अगर रेलवे एक स्टेशन तक पहुंचती है, फिर वहां से फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए अगेन यू नीड द फैसिलिटी ऑफ अ रोड. सो रोडवेज कैन एक्ट along with the railways, they can play a complementary role. Okay. So railways depend on roads for the distribution and collection of the goods that they carry. The kind of goods like coal ho, या heavy cargo ho, infrastructure material ho, that railways carry, but they can carry it only to a particular distance. उसके बाद they have to again depend on road transport to carry it to their final destination. Then roads are more flexible than
rail transport, they are more accessible to different places than railways, right? Obviously roads, it can come right up to your doorstep, whereas in the case of a railways you need to go to the nearest railway station. Perishable commodities like milk, fruits and vegetables are more quickly carried by roadways than railways, because railways depend on a rail network, the congestion on the rail network. Roadways are able to go much faster. Of course you do have traffic jams and the fact that long distances, it sometimes takes a long time, but still for perishable goods like vegetables, like milk, etc., roadways are still preferable to railways. Disadvantages: roads are not suitable for long distance travel because it can get quite tiresome, whereas on a train you can actually have a little more leisurely way of travel. Heavy commodities like coal and iron cannot be transported easily through roads, because obviously if it's a very heavy kind of material, negotiating it on the road space will be a little difficult, because there is a paucity also of कमी भी रहती है road space की. तीसरा disadvantage: the rapid rise in the number of vehicles on the roads has resulted in increasing air pollution. That's a side effect of roadways. It is more expensive than rail transport because of the increasing cost of petrol and diesel, right? Now, on the basis of their importance and maintenance, Indian roads can be divided into the golden quadrilateral superhighway. This was built during the time when Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister of India, and this was one of his pet projects कि हम एक golden quadrilateral बनाएं which will connect the 4 metro cities essentially, but it will actually connect many more towns and cities on the way. So Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, एक तरह से rhombus shape में it will connect. So it has a total length of, it is a 6-lane superhighway, and it has a total length of 5,846 kilometers. This figure, please remember, 5846 kilometer. The 4 sides are of obviously different lengths because the distances are not the same. So the Mumbai-Chennai from west to south is the shortest superhighway, whereas the Mumbai-Kolkata one is the longest. The north-south corridor comprises the national highways connecting Srinagar to Kanyakumari. Kanyakumari right at the southernmost tip of India, and the east-west corridor consisting the national highways from Silchar, which is in the northeast, to Porbandar in Gujarat. The construction has led to general improvement of the area and also reduction in vehicle operating costs, travel time and more employment. अगर आपको गोल्डन क्वाड्रिलैटरल के एडवांटेजेस पूछे जाएं तो आपको ये सब मेंशन करने पड़ेंगे कि ज़्यादा लोगों को काम मिला है, एम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन जनरेटेड, travel time कम हुआ है, if there are better roads which are able to go faster in a 6-lane superhighway, और vehicle operating costs में भी कमी हुई है. If the roads are good, obviously the breakdowns are less and vehicles can travel that much faster in a more efficient manner, right? Now expressways have been constructed. Now the expressways have essentially, expressways हैं जैसे मुंबई पुणे का expressway is a very popular expressway which is frequented quite often, have been constructed for swift and smooth travel between important towns. Now that's the definition of an expressway, that they are essentially constructed between 2 important towns to ensure swift and smooth travel के लिए. और इसमें भी एक तरह से 6 लेन का हाईवे रहता है एंड डिवाइडेड इन द मिडिल बाय ए वेरी वाइड डिवाइडर, ताकि किसी तरह का दुर्घटना ना हो, एक्सीडेंट्स ना हो. और इस पे नॉर्मली 2 व्हीलर्स या ऑटो रिक्शास को जाने की अनुमति नहीं दी जाती, ताकि जो 4 पहिया वाहन जो हैं, जो 4 व्हील cars are there, they can travel at a higher speed and the speed limit is also a little on the higher side. They can go up to speed of 100 to 120 kilometers per hour is the maximum speed limit allowed. And most of them are toll roads, that is उसमें आपको जाने के लिए टोल भी पे करना पड़ता है. और इसमें जो 2 प्रमुख एक्सप्रेसवे हैं अभी भारत में, वे हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और कोलकाता दुर्गापुर एक्सप्रेसवे. कोलकाता दुर्गापुर जो कि वेस्ट बंगाल में है, राइट, और ये महाराष्ट्र में है. Now the main roads constructed and maintained by the Central Public Works Department are called the national highways. अभी आपका हो गया गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, दूसरा हो गया एक्सप्रेसवे. एक्सप्रेसवे और गोल्डन क्वाड्रिलैटरल में प्रमुख कारण अंतर ये है कि एक्सप्रेसवे इज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 2 इंपॉर्टेंट टाउन्स. तीसरा हो गया नेशनल हाईवे which has been there right from the beginning. They connect state capitals, big cities and also important ports. National highways are the main routes that spread throughout the country. पूरे देश को बांधने का काम राष्ट्रीय मार्ग करते हैं. They make up, and this is an important statistic जो कई सारे अफसर भी हमको बताते हैं, कि they make up only 2% of the total road length. जो भारत में जितने भी रोड हैं उसका सिर्फ 2% ही नेशनल हाईवेज हैं, लेकिन
रोड ट्रैफिक का जो पूरा जितना भी रोड ट्रैफिक जाता है उसका 45% ऑफ द रोड ट्रैफिक ट्रेवल्स ऑन दीज national highways. So that's an important statistic, and in fact even the accident rate unfortunately is as high as 40% on these national highways and state highways combined. So that's also a slightly disturbing statistic, but आपको जो याद करने का जरूरत है वो ये है कि they constitute about 2% of the total road length but carry 45% of the entire traffic of the country. Now the historic important Sher-Shah Suri mark between Delhi and Amritsar is called the National Highway number 1. ये old NH1 है, हालांकि आपकी बुक में वही लिखा है, लेकिन जो उसके बाद NH1 को फिर से रीनंबर किया गया था और अभी का जो न्यू NH1 है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये चलता है उरी और लेह के बीच में, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के बीच में। उरी और लेह के बीच का जो रोड है उसको नेशनल हाईवे नंबर 1 के रूप में अभी जाना जाता है। इसके साथ साथ एक कपल ऑफ इंटरेस्टिंग details also I must tell you. This could come as a 1 mark or 2 mark kind of question, as almost like a surprise element, because you are expected to know when you're studying about national highways, you're also expected to know things which are not exactly only in this textbook, which is the textbook of Frank Brothers and Company, the Frank Modern Certificate Geography for class 10 part 2. Now isme there are some more details which I have taken down. For instance, the longest national highway भारत में कौन सा है? The longest national highway is between Srinagar and Kanyakumari, that is NH44, National Highway 44, and उसका length है 3745 किलोमीटर, 3745 kilometers. Please remember this. The second longest highway, national highway भी आपको जानना, it may just be important, it's just GK lessons, and it in case of the possibility of it coming in the exam, and or if you have to write a question answer on national highway which carries 3 marks or something, it may actually be better for you to give these kind of details just for you to impress the person who is checking your answers कि आपको पूरी जानकारी है. So the second longest national highway is NH27. पहला तो हो गया 44, दूसरा है 27, 27, that is between Porbandar and Silchar, Porbandar in Gujarat to Silchar in Assam, and that length is 3507 km, 3507. So these are 2-3 little details that you would do well to remember. Now ये तो हो गया, हमने national highways की बात कर दी. Now maximum roads are found in the northern plains due to its fertile soils. This is important because one of the questions that has come earlier in the board exam, मैं important questions के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, probably sometime in January when you are more closer to the exams, and also by that time you would have revised most of the chapters. Now maximum roads are found in the northern plains. क्यों नॉर्दर्न प्लेन्स में ज्यादा रोड्स पाए जाते हैं, ऐसा प्रश्न भी पहले पूछा गया है अगर आप 10 साल के बोर्ड पेपर्स देखें तो. दैट इज बिकॉज ड्यू टू इट्स फर्टाइल सॉइल्स एंड हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. हाई डेंसिटी का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर स्क्वायर किलोमीटर्स में कितने सारे लोग रहते हैं, उसको कहते हैं द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. तो चूंकि हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्दर्न प्लेन्स में, तो वहां पर एक तरह से रोड ट्रांसपोर्ट ज्यादा मिलता है. द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स डू नॉट हैव गुड रोड्स ड्यू टू डिफिकल्ट लैंड सर्फेसेस, स्विफ्ट स्ट्रीम्स, काफी सारी नदियां या झरने बहते हैं, थिक फॉरेस्ट, जंगल ज्यादा है, एंड बैकवर्ड इकोनॉमी, वहां की जो अर्थव्यवस्था है वो भी ज्यादा डेवलप्ड नहीं है. तो इन 4 कारणों की वजह से नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा सड़कें हमको नहीं मिलती हैं, लेकिन जो प्लेन एरिया है, बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, वहाँ पर हमको ज़्यादा सड़कें और रोड ट्रांसपोर्ट ज़्यादा एक तरह से डेवलप्ड मिलता है. इट्स ऑल्सो नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ ब्रिजेस वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि अगर नदियाँ या झरने ज़्यादा हैं तो वहाँ पर एक तरह से पुल बनाने की भी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, जो कि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है. इट नीड्स अ लॉट मोर ऑफ इंजीनियरिंग स्किल एज वेल. ओके, सो ये तो हो गया जहां तक रोडवेज का सवाल है. इसके साथ साथ आपको हो सकता है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना क्या है उसके ऊपर प्रश्न आए. नॉर्मली नहीं आएगा, लेकिन आपको इस सब के बारे में जानकारी रखना जरूरी होता है. इस बेसिकली स्कीम के तहत प्रोविजंस हैव बीन मेड सो दैट एवरी गांव, देश का हर गांव में एक तरह से एक अच्छी सड़क जाती रहे, एंड दिस इज कॉल्ड द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना. रोड की डेंसिटी, नेशनल डेंसिटी ऑफ द रोड कितनी है? नेशनल डेंसिटी इज 75 किलोमीटर्स, राइट? दैट्स कॉल्ड द नेशनल डेंसिटी ऑफ द रोड. एंड डेंसिटी ऑफ द रोड का डेफिनेशन इज दैट द लेंथ ऑफ ए रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज नोन एज द डेंसिटी ऑफ रोड. कि 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में
कितनी लंबी सड़क पाई जाती है, कितने किलोमीटर सड़क पाई जाती है, दैट इज नोन एज द नेशनल डेंसिटी ऑफ ए रोड. सो आपको ये डेफिनेशन याद रखना भी जरूरी है. एंड नेशनल डेंसिटी ऑफ रोड्स इन इंडिया इज 75 किलोमीटर, लेकिन द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रोड इज इन केरला विच इज 375 किलोमीटर. ओके, 375 kilometer is the density of road in Kerala, which is the highest in the country, but otherwise on an average the national density of road in India is 75 kilometers, right? So ये तो हो गया जहां तक रोडवेज का. आई हैव टोल्ड यू विस्तार से जितने भी प्रश्न इसमें आ सकते हैं. अब हम चलते हैं रेल ट्रांसपोर्ट की तरफ. नाउ द इंडियन रेलवे सिस्टम इज द लाइफलाइन ऑफ द कंट्रीज इनलैंड ट्रांसपोर्ट लार्जली. It serves the needs of many by carrying both passengers and freight. It brings economic prosperity to the areas through which they pass and promotes national integration. National integration, राष्ट्रीय इंटीग्रेशन में काफ़ी बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि ट्रेन में जब आप सफ़र करते हैं, आपके साथ साथ को पैसेंजर्स कौन होते हैं, आपकी उनसे दोस्ती हो जाती है. तो डिपेंडिंग इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, हर किस्म के आदमी और औरत रेल से सफर करते हैं. और इफ यू रिमेंबर, इतिहास के चैप्टर्स में हमने आपको यह भी बताया था, दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट डाउट्स ऑफ द पीपल एट दैट टाइम व्हेन द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड रेलवेज इन 1853. लगता था कि दिस इज ए वे टू काइंड ऑफ सबवर्ट एंड रिड्यूस द इंपॉर्टेंस ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया करके उस समय पर काफी शक था लोगों को. नाउ द फर्स्ट रेलवेज वाज स्टार्टेड इन 1853, जैसे मैंने कहा, एंड दैट स्टार्टेड बिटवीन बॉम्बे एंड थाने. ओके, the northern plains with its flat level land, this is important, the reasons why the northern plains has the most favorable condition for the development of the rail network. The northern plains with its flat level land, ताकि रेल का पटरी सीधे जा सके, high density of population, same reasons as for road transport, and rich agriculture has the most favorable condition for the development of railways. But the large number of rivers needs the construction of bridges. गंगा नदी, यमुना नदी बहती हैं उत्तर भारत से, तो उससे जरूरत पड़ती है कि उनको ब्रिज का भी निर्माण करना पड़ेगा. एंड दैट रिक्वायर्स heavy expenditure and also, as I said, engineering skill, better engineering skill. There are a few railways in the floodplains in the Himalayan region because of its ruggedness. The plateau region and also the sandy areas of Rajasthan are also not suitable for railways. So राजस्थान के जो रेतीला एक तरह से भूमि है, वहाँ पर भी रेल पटरी डालने की में मुश्किल आती है. इसके साथ जो हिमालयन रीजन है, जैसे उत्तराखंड हुआ, तो वहाँ पर भी रेल पटरी, रेल नेटवर्क डालने में मुश्किलात आती है. और इसके साथ साथ प्लेन्स में हालांकि वहाँ पर नदियाँ हैं, जिसकी वजह से उनको ब्रिजेस का निर्माण करना पड़ता है, लेकिन उसके अलावा बिकॉज ऑफ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, रिच एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो द फ्लैट लेवल लैंड, रेल पटरी नॉर्मली इन द प्लेन्स डालने में मुश्किलात नहीं आती है. नाउ रेलवे, इंडियन रेलवेज कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स, और ये आपको डेफिनेशन याद रखना अगेन जरूरी है. ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज. ब्रॉड गेज में द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पटरीज इज 1.676 मीटर्स, 1.676 मीटर, एंड मोर देन 70% ऑफ द इंडियन रेलवेज इज मीटर गेज. ओके, ब्रॉड गेज, सॉरी. द सेकंड आता है मीटर गेज, जो कि थोड़ा और नैरो रहता है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर. पहला तो हो गया 1.676 मीटर, इन दोनों के बीच में 1 मीटर का अंतर रहता है. और अबाउट 23% ऑफ इंडियन रेलवेज इज मीटर गेज. सो 70% हो गया ब्रॉड गेज, 23% हो गया मीटर गेज, और बाकी का रहता है नैरो गेज, विच इज एसेंशियली यूज्ड फॉर टॉय ट्रेन्स और इन द एक्सट्रीमली हिली रीजन, जहां पे इस तरह की पटरियां नहीं ले की जा सकती. Narrow gauge is less than 1 meter का distance and that is only 0.762 meters. और इसमें भी 2 टाइप के रहते हैं. दूसरा रहता है और भी narrow, 0.610 meters, and that is restricted only to the hilly areas. The toy train between Siliguri and Darjeeling and the one between Kalka and Shimla are some of the important narrow gauge railways. तो आपको ये 2 एग्जाम्पल्स को याद करने की जरूरत है. कालका और शिमला के बीच में और दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के बीच में जो टॉय ट्रेन है वो नैरो गेज का इस्तेमाल करते हैं. नाउ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स आर हैम्पर्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ द रेलवे ऑपरेशंस इन 3 गेजेस. चूंकि ये रेलवे का जो गेज का जो अंतर है, उसकी वजह से, बिकॉज वन काइंड ऑफ ट्रेन कैनॉट रन ऑन दी, if it's built for the broad gauge, the wheels, it cannot run on the meter gauge. The meter gauge cannot run on the broad gauge. Similarly, they cannot run on the narrow gauge, right? So, chunki they are all for very specific routes, that is also seen as one of the unfavorable condition for the development of railways from a operational point of view in India, and that becomes
the shifting from one gauge to another is not possible, so that becomes an expensive affair. And perishable goods, अगर उसमें कोई perishable goods का ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, दूध हो या वेजिटेबल्स हो या फ्रूट्स हो, so that becomes a problem area because obviously you cannot shift from one gauge to the other, and the tracks are not able to carry increased loads and accidents are becoming quite frequent because ट्रेन के derailments या accidents के समाचार तो आप सुनते रहते हैं. इसके साथ साथ जहां पे भी ब्रिजेस का निर्माण किया जाता है उनकी मरम्मत और उनके मेंटेनेंस में भी काफी खर्चा भी आता है, एंड दैट इज आल्सो ए वेरी टाइम कंज्यूमिंग अफेयर. इसके साथ साथ जो जहां तक रेलवेज के बारे में देयर आर अ फ्यू स्टैटिस्टिक्स दैट आई वुड वांट यू टू रिमेंबर. द टोटल रूट लेंथ ऑफ द इंडियन रेलवेज का पूरा जो जितने भी ट्रैक्स हैं उसका पूरा लेंथ कितना है, दैट इज 63,221 किलोमीटर्स. So 63,221 kilometers. Please remember this statistic. That is something which you would need to know. And इसके अलावा is there any other important statistic that we will come to once we finish the entire chapter. Okay. अब हम आते हैं water transport की तरफ. Water transport, this includes both inland and coastal waterways and is an important means of transport for both cargo and passengers. Okay. तीसरा हो गया waterways, roadways, railways, waterways. Now waterways are the cheapest means of transport for large and bulky loads. जब बहुत ज्यादा सामान ले जाने की जरूरत हो तो एक तरह से waterways सबसे चीपेस्ट हो जाते हैं. इसका प्रमुख कारण यह है कि अनलाइक रेलवेज जहां पे पटरियां ले करनी पड़ती हो, एक तरह से पूरा इंजीनियरिंग करना पड़ता हो, या रोड्स में भी काफी इंजीनियरिंग का काम होता हो, खर्चा भी होता हो, वाटरवेज में एक तरह से तो वाटर और the path is already available, so that's a big advantage. So waterways, that makes it the cheapest means of transport, especially when you are talking about transporting heavy and bulky goods. It also has the advantage of using existing routes, example rivers and seas. नदियां और समुद्र दोनों के बीच में से वाटरवेज को एक तरह से ऑपरेट किया जा सकता है. ओनली द कैनाल्स आर नेसेसरी, ताकि एक वाटरवेज के रूप में उसको डेवलप किया जाए कि कैनाल्स में किसी तरह का, उसके कारण भी हम पढ़ेंगे कि गंदगी ना हो, मिट्टी ना हो, जिसकी वजह से एक नाव या किसी तरह का बिग वेसल कैन फ्लो थ्रू इट स्मूथली. येट inland waterways are unable to compete with road and railways because of its slow speed. But the biggest disadvantage of a waterways compared to airways, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, या roadways और railways हो, कि उनकी स्पीड कम रहती है. उनकी स्पीड कम रहती है तो समय ज्यादा लगता है एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए. So that is a disadvantage. Now one important inland waterway is Ganga, which is navigable by ordinary boats right up to Haridwar, and it is called National Waterway number 1. So गंगा में जो हरिद्वार तक का जो waterway है उसको National Waterway number 1 कहते हैं. That distance is 1,620 kilometer, 1620 kilometer long, and it goes right up till Haridwar. इसके अलावा ब्रह्मपुत्रा हो, गोदावरी हो, ब्रह्मपुत्रा इन आसाम, गोदावरी कृष्णा इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और बकिंगम कैनाल जो तमिलनाडु है, उसके ऊपर भी वाटरवेज को एक तरह से डेवलप किया गया है. इनफैक्ट जो जितने भी प्रदेश हैं, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, खास तौर पर वहाँ पे एक तरह से वाटरवेज को डेवलप करने की काफ़ी कोशिश की जाती है इन ऑर्डर टू डेवलप इट एज एन ऑल्टरनेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. नाउ किन कारणों से वाटर ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ता है? पहला, रेगुलर वो ऑफ सफिशिएंट वाटर. अगर समर के महीने में, गर्मी के महीने में खास तौर से हमने देखा है काफ़ी नदियां सूख जाती हैं, तो पानी ही नहीं रहेगा तो वाटरवेज होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है. सो उन महीनों में उन कारणवश एक तरह से वाटरवेज पर काफ़ी गंभीर समस्या पैदा हो जाती है. इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर द वाटरवेज. द प्रेजेंस ऑफ वाटरफॉल्स, कैटरैक्ट, शार्प बेंड्स अलोंग ए रिवर्स कोर्स हिंडर्स द डेवलपमेंट ऑफ वाटरवेज. अगर कोई ऐसी वाटरवे कैनाल हो जो कि काफ़ी आड़ी टेढ़ी हो, टेढ़ी मेढ़ी जाती हो, तो उसमें से जो अगर बड़ा सा वेसल हो तो उसको नेगोशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. इसके साथ साथ थोड़ा रॉकी सरफेस हो या काफ़ी सारे झरने हो तो उससे भी मुश्किलात आ सकती हैं. सो दैट कैन बी अनदर डिसएडवांटेज फ्रॉम ए वाटरवेज ट्रांसपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू. तीसरा, सिल्टिंग ऑफ द रिवर बेड रिड्यूसेस द डेप्थ एंड क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर नेविगेशन. अगर एक तरह से सिल्ट का मतलब एक तरह से मिट्टी काफ़ी जम जाए, नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर ना रहे, तो उसके वजह से भी वाटरवेज में को दिक्कतें आती हैं. वाटर इन रिवर्स इज समटाइम्स रिड्यूस्ड ड्यू टू डाइवर्शन ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन. अगर कृषि के लिए पानी को काफ़ी ले जाया जाए, सिंचाई के लिए ले जाए, इरिगेशन के लिए ले जाए तो एक तरह से नदी के पानी में
एक तरह से कमी होने की वजह से भी वाटरवेज पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है. There should be a sufficient demand for waterways to make it economically worthwhile mode of transport. Waterways is still not really seen as the most preferred way mode of transport, तो उसको encourage करने की काफी आवश्यकता भी है. अब भारत के पास एक लंबा कोस्ट लाइन है. पूरा देखें, बंगाल हो, उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, अगर आप भारत के मैप को देखें, तमिलनाडु हो और इस तरफ केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, तो एक तरह से बहुत लंबा कोस्ट लाइन है भारत के पास. और इस कोस्ट लाइन को डेवलप करने की काफी एक तरह से देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर इट. नाउ द कोस्ट लाइन हैज 12 मेजर एंड 184 इंटरमीडिएट एंड माइनर पोर्ट्स. इतने सारे पोर्ट्स आर अवेलेबल इन इंडिया. 12 मेजर एंड 184 intermediate and minor ports, and all these ports are served by coastal waterways. Okay, a port, अब definition पे आते हैं और आपको ये याद रखना पड़ेगा. A port is a place on the coast, okay, with docks where cargo can be unloaded and distributed through land roads and vice versa. These ports handle most of India's foreign trade. अब चेन्नई का पोर्ट हो गया, गोवा का पोर्ट हो गया, मुंबई which is one of the biggest, मैंगलोर, विशाखापट्टनम. Now these are all ports which are there which handle a lot of India's cargo. तो roadways और waterways through these ports get interconnected. आप समझे कि नदी के रूट से, समुद्र के रूट से पोर्ट तक आता है और उसके बाद फर्दर ट्रांसपोर्ट होने के लिए यू ऑब्वियसली नीड रोडवेज टू एन एक्सटेंट, समटाइम्स इवन रेलवेज, बट रोडवेज इज रियली द इंटरकनेक्टिंग लिंक. सो पोर्ट का डेफिनेशन है, ए पोर्ट इज ए प्लेस ऑन द कोस्ट विद डॉक्स, जहां पे डॉक्स बोलते हैं मजागांव डॉक्स, चेन्नई का पोर्ट है वहां पे डॉक्स हैं. बेसिकली यू डॉक योरसेल्फ देयर, वेयर कार्गो कैन बी अनलोडेड, कार्गो को अनलोड किया जाता है, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द लैंड रूट्स एंड वाइस वर्सा, कि कार्गो को लोड करके समुद्र के रूट से बाहर देश में भी भेजा जाता है या दूसरे प्रदेश में भी भेजा जाता है. और इसी से भारत का सबसे ज्यादा विदेशी ट्रेड, व्यापार सी रूट से किया जाता है. अब हम आते हैं कुछ ऐसी जगह बातों के बारे में जिनका कि असर आपको मैप पे भी दिखेगा, कि मैप पे भी समटाइम्स आपको मार्किंग करने के लिए ये प्लेसेस दिए जाएंगे. तो आपको ये जो जितने भी लोगों जगहों की मैं मेंशन करूं, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और आपको इंडिया के मैप में इसको आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा कि इनकी एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है. तो सबसे पहला तो हुआ मुंबई. मुंबई इज ए नेचुरल हार्बर ऑन द वेस्ट कोस्ट, हैंडलिंग मोस्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड. The new port of Nhava Sheva has been opened off Mumbai port, which is a highly mechanized modern port. It was built to release the pressure on Mumbai port. तो मुंबई के पास दो different ports हैं and both of them are extremely busy ports, अगर आपने कभी देखा होगा तो. Kandla was also developed to release the pressure on Mumbai port. It is a tidal port located on the eastern end of the Rann of Kutch. So गुजरात में पड़ता है कांडला, दैट इज अनदर मेजर पोर्ट, और उसको इसलिए वहां पे उसका निर्माण किया गया ताकि मुंबई के पोर्ट पर थोड़ा सा प्रेशर को कम किया जाए. कोची जो कि केरल में पड़ता है इज अनदर नेचुरल पोर्ट लोकेटेड ऑन ए लगून. तो आपसे ये पूछा जा सकता है मैप के हिसाब से कि आइडेंटिफाई और लोकेट द नेचुरल पोर्ट विच इज लोकेटेड ऑन ए लगून. तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोची है, और दूसरा बात ये भी मालूम होना चाहिए कि कोची एग्जैक्टली आपके मैप में कहां पर है. तो ये केरल में है. तो अगर आप जब मैप मार्किंग करते हैं तो आपको सेंसिबली आपको देखना होगा कि कहां से आता है. जो इंडिया के डिफरेंट मूव्स, कभी प्रोट्रूडिंग आउट होता है, कभी प्रोट्रूडिंग इन होता है, उस हिसाब से अगर आप अंदाजे से देखें तो आपको मैप को आइडेंटिफाई करने में, लोग जगहों को आइडेंटिफाई करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी. सो कोची इज अनदर पोर्ट, नेचुरल पोर्ट विच इज लोकेटेड ऑन ए लगून. लगून मतलब इट्स ए लिटिल इनसाइड. Marmagao is an important port in Goa. New Mangalore is located on the coast of Karnataka and it handles the export of iron ore. So आपसे ये पूछा जा सकता है, and this I would suggest to you to do it almost like a quiz with your siblings and your friends, की which is the port which handles the export of iron ore on the India's western coast. That is Mangalore. So you need to remember these kind of things very importantly. Now, which are the ports on the east coast of India? That is Bengal, Orissa, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Tuticorin, जो कि तमिलनाडु में है, that is one of the new ports in Tamil Nadu. Chennai is the oldest artificial harbour on the east coast of India and it is one of the biggest ports in India. Visakhapatnam is a deeply landlocked
एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट। प्रोटेक्टेड इसलिए क्योंकि जिस तरह की शेप है, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ डॉल्फिन्स नोज, जिसकी वजह से विशाखापट्टनम पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो जाता है लार्जली साइक्लोन्स वगैरह, एक्सेप्ट साइक्लोन हुडहुड जो कि 2014 में हिट किया था विशाखापट्टनम को। नॉर्मली दे गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम साइक्लोन्स आल्सो बिकॉज ऑफ दिस डॉल्फिन्स नोज व्हिच इज अ नेचुरल प्रोटेक्शन फॉर द सिटी ऑफ विशाखापट्टनम, बट इट इज द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट। इट्स ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट शिप बिल्डिंग सेंटर। वहां पे एक बड़ा सा विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट है और काफी सारे PSUs, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी हैं जो कि शिप बिल्डिंग में इन्वॉल्व रहती हैं। पारादीप इज ऑन द ओडिशा कोस्ट। हल्दिया is a new port developed on the river Hooghly to release the congestion at Kolkata port. So Haldia भी है, Kolkata port भी है, and Kolkata is a riverine port on the Hooghly river. It suffers from the problem of silting at tidal boats enter this port quite frequently. तो ये सब हो गए ports. As I said before, you need to remember both the important characteristics of each of these ports and also remember which places they are located. Okay. Now, just an important statistic that I would like to give you is the coastline of India. The length of the coastline of India is 7,516 kilometers. 7,516 kilometers. ये आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ there are some abbreviations. Of course, I will be doing separate lessons on important questions from geography, just like I would be doing it for both history, civics and English also. तो उसमें you need to remember the full form of NHAI, National Highways Authority of India, the BRO, which is the Border Roads Organization. So Golden Quadrilateral का जो definition है वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो उस तरह के आप रखेंगे questions को I will prepare you closer to the examination, so उससे आपको आसानी भी होगी और आपको सहायता भी मिलेगी। इसके साथ साथ one question I am seeing in 2013 के पेपर में, give two reasons why peninsular rivers in the peninsula, that is in the south rivers, are not ideal for navigation. One, they are not perennial, कि गर्मी के महीने में एक तरह से सूख जाते हैं, and we are talking about rivers like Godavari and Krishna and Kaveri. And number two, they flow swiftly over the plateaus and the highlands. Okay, so in दो कारणों की वजह से they are not considered ideal for waterways. So then there is something called the IWAI, just like the NHAI. IWAI is Inland Waterways Authority of India, IWAI, and that was developed for the development. That was set up for the development and navigation of inland waterways for shipping and navigation. Okay, so these are this thing. For instance, two states which have high density of railways, those are Bengal and Punjab. So आपको इस तरह के थोड़े से details को भी याद रखना जरूरी पड़ जाएगा as far as geography is concerned. Finally, at the end of this chapter, let's come to air transport now, which is obviously the fastest mode of transport, as most of us know. It is free of physical barriers such as mountain ranges, and they can fly from over any place. That's not an issue at all. But there are a few limiting factors as far as airways are concerned. It has limited carrying capacity. आप उसमें बहुत बड़ा सामान जैसे waterways हो या railways हो, उस तरह का बड़ा सामान airways से नहीं ले जा सकते, because obviously कितना आप freight ले जा सकते हैं, cargo ले जा सकते हैं, उस पर एक तरह की limitation बन जाती है। दूसरा, the cost of air transport because of aircraft cost, fuel cost, then of course the charges at the airport etc. तो उसकी वजह से flying becomes a slightly expensive kind of a mode of transport, and it's still seen as a luxury, though आजकल उड़ान scheme के under lot of new airports, smaller airports in smaller towns have also been opened up, and weather conditions can also hamper air transport to a large extent, especially during winter. काफी सारे हवाई अड्डों को दिक्कत आती है भारत के अंदर. So, and you will also need to remember some of the names of the larger airports which are established in the country, whether it is New Delhi or Kolkata or Mumbai, the Chennai airport, Hyderabad ho, Bangalore ho. So you will need to remember some of the more important airports in the country. So this is these are some of the this is basically the gist of the chapter on transport. Not very difficult, but at the same time, as I said, you need to remember the basic details and some of the statistics which I have mentioned in this particular chapter. We will be looking at it from an examination point of view sometime in January when you have revised most of the chapters in geography. Thank you very much for watching.